Welcome again, students. We will continue by our topic, that is structure of DNA. As you know, in our previous lecture, we come to learn that the three-dimensional model of DNA molecule was proposed by Watson and Crick. But we also know that they didn't perform any new experiments. They only used or synthesized the data which was available from the other sources. Now we learned about the Chargaff's rules in our previous lecture, and now we will study the X-ray diffraction pattern of DNA. Remember, these two are the principal investigations which were used by the Watson and Crick to prepare their 3D model of the DNA, that is known as double helix model. Now here we will try to understand about the X-ray diffraction pattern of DNA. Now first, let us try to understand what do we mean by X-ray crystallography. X-ray crystallography, it is a technique which determines the 3D or three-dimensional structure of a macromolecule. So a technique which determines the 3D structure or three-dimensional structure of a large or macromolecule is called X-ray crystallography. There are several X-ray crystallographers. Now, when this X-ray crystallography is done, the pattern obtained after diffraction of X-rays through a crystal, it is called X-ray diffraction pattern. So X-ray diffraction pattern is the pattern which is obtained when X-rays are passed through a crystal of a large molecule or a macromolecule. Now, these techniques, that is X-ray crystallography and the X-ray diffraction patterns, have been variously used by the scientists to devise or to find the 3D structure of different macromolecules or large molecules. One of the largest molecule or the macromolecule present in the cells is the DNA. The crystallography and the X-ray diffraction patterns of DNA was taken by several scientists, several crystallographers, and we will mention some of them. First, I am taking here Astbury. William Astbury. In 1937, he obtained the X-ray diffraction pattern of DNA and found that the nitrogenous bases, this is a very important observation which was done by Astbury, that the nitrogenous bases present in DNA occur as flat rings. So remember this, as said by Astbury, that the nitrogenous bases present in the DNA occur as flat rings, and these flat rings of nitrogenous bases are pilar, or we can say stacked, one above other, just like the pile of pennies. बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से पेनीज का एक पायल बनाया जाए, तो उसी तरीके से स्टैक्ड है in the DNA. So this was the observation of the Astbury. Remember, this Astbury is sometimes referred to as a forgotten hero, क्योंकि इसका कोई क्रेडिट नहीं दिया गया डीएनए डिस्कवरी में, जबकि हम जानते हैं कि फर्स्ट कि एस्टबरी ने ही यहाँ पर एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न स्टडी किया डीएनए का, और ये हमें बता दिया दैट इज नाइट्रोजनस बेसिस इन द डीएनए आर स्टैक्ड वन अबव द अदर.
So and also he found that the distance between two bases, so the two bases between two bases जो distance है, and that distance was found to be 3.4 angstrom units. If we will convert it into nanometers, it would be 0.34 nanometers. Now this was the inference of the Astbury. Now here we should remember that this Astbury provide the first evidence of this, that there are nitrogenous bases inside the DNA and which are staggered one above the other, and the distance between the two bases is 0.34 nanometers or 3.4 angstrom units. जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि इसे अनसंग हीरो या फॉरगॉटन हीरो कह सकेंगे हम, क्योंकि कोई क्रेडिट नहीं है इसको दिया गया इन द डीएनए डिस्कवरी. नाउ रिमेंबर, ये वही एस्टेबरी था जो काम कर रहा था केराटिन पे, प्रोटीन्स पे, उनकी एक्सरे डिफ्रैक्शन कर रहा था. तो उसी की इन्वेस्टिगेशंस लेकर पॉलिंग ने डिस्कवर किया अल्फा हेलिक्स. सो यही एस्टेबरी वो एस्टेबरी है जी who in 1946 said that the investigation was performed by the Avery, MacLeod and McCarthy are the remarkable investigations of the present century. Now, तो यहाँ तक हमने थोड़ा सा जान लिया इस क्रिस्टलोग्राफर के बारे में जिसने थोड़ा सा अपना योगदान दिया डीएनए डिस्कवरी में, लेकिन हाँ ये याद रखें कि इसे वो क्रेडिट नहीं मिला. Now we will talk of the Wilkins and Rosalind Franklin. Morris Wilkins and Rosalind Franklin. Now these crystallographers, they confirmed the inferences which were given by Astbury. Now they took X-ray diffraction photographs, several X-ray diffraction photographs, by passing the X-rays through the DNA crystals, whether hydrated or dry crystals, and several photographs were taken, and they suggested that the DNA has a helical configuration. So यहाँ पर हम importantly ये याद रखेंगे कि विल्किन्स और रोजालैंड फ्रैंकलिन के जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी एक्सरे डिफ्रैक्शन फोटोग्राफ्स थे, तो उनकी वजह से ये सजेस्ट किया गया दैट डीएनए इज हैविंग द हेलिकल कन्फिगरेशन. यहाँ पर हम एक बात याद रखेंगे कि जो विल्किन्स और फ्रैंकलिन, रोजालैंड फ्रैंकलिन was actually hired by the King's College during the absence of Wilkins. तो लेटर जब विल्किन्स ने ज्वाइन किया तो विल्किन्स कंसिडर फ्रैंकलिन एज हिज असिस्टेंट, तो उसके बाद फ्रैंकलिन को इसको असिस्ट करना पड़ा. लेकिन बहुत सारा काम जो इस स्पेस एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न्स पे किया वो सारा फ्रैंकलिन ने किया, और उसका एक स्टूडेंट था गॉसलिंग. तो फ्रैंकलिन एंड हर स्टूडेंट performed several X-ray diffraction investigations or experiments and took several X-ray diffraction patterns or photographs. And तो उसमें the photograph number 51 has become the famous, and that is called the photo 51. और वही फोटोग्राफ था जो गोजलिंग ने प्रोवाइड किया विल्किन्स को इन एब्सेंस ऑफ फ्रैंकलिन, और विल्किन्स ने विदाउट द कंसेंट ऑफ फ्रैंकलिन इस फोटोग्राफ 51 को प्रोवाइड किया वाटसन एंड क्रिक को. नाउ इन देयर इन्वेस्टिगेशंस दे फर्दर सेड दैट, एक तो हमने यहाँ पर देखा दैट दे सेड द डीएनए हैज द हेलिकल कन्फिगरेशन. दूसरा ये पॉइंट कि द डीएनए हैज a constant width, that is constant diameter all along its length, and that constant diameter is equal to 2 nanometers, or we can say 20 angstrom units. So यहाँ तक मैं थोड़ा सा रिकैप करूँ तो उसके बाद मैं बोर्ड रब करूँगा. हम यहाँ पर जान रहे हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ डीएनए. रिमेंबर हम तभी
वाटसन और क्रिक का मॉडल समझ सकते हैं, अच्छी तरह याद रख सकते हैं हमेशा के लिए, जब हम ये इन्वेस्टिगेशन को अच्छी तरह जान लें। तो एक इन्वेस्टिगेशन जो कल के वीडियो में हमने डिस्कस की, दैट वाज द चरगॉफस रूल, जिसे भी यूटिलाइज किया वाटसन एंड क्रिक ने। तो ये आज दूसरी इन्वेस्टिगेशन जिसके बारे में हम जान रहे हैं, दैट इज एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ डीएनए। मैंने आपसे यही कहना है कि बहुत सारे एक्सरे क्रिस्टलोग्राफर्स थे जिन्होंने काम किया डीएनए पर। तो इनमें एक अनसंग हीरो है अष्टबरी। 1937 में उसने ये बता दिया, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी जो इसके डिफ्रैक्शन पैटर्न थे उसके बुनियाद पर उसने कहा दैट नाइट्रोजनस बेसिस इन द डीएनए आर they occur as flat rings and they are stacked one above the other in the form of piles of pennies, and the distance between the two bases is equal to 3.4 angstrom units, or we can say 0.34 nanometers. तो उसके बाद हमने यहाँ पर स्टार्ट किया कि विल्किंस और रोजलैंड फ्रैंकलिन, दे वर आल्सो क्रिस्टलोग्राफर्स, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफर्स। तो इनके बारे में मैं आपसे बता रहा हूँ कि यहाँ पर विल्किंस और रोजलैंड फ्रैंकलिन ने भी एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की। बहुत सारे एक्सरे डिफ्रैक्शन फोटोग्राफर्स उन्होंने लिए, और ये सब उन्होंने किया जब उन्होंने पास की एक्सरेज थ्रू द क्रिस्टल्स ऑफ डीएनए, और बहुत सारे फोटोग्राफ्स लिए। इनमें से फोटोग्राफ्स जो एक्चुअली फ्रैंकलिन और उसके स्टूडेंट गोजलिंग ने ली, तो फोटोग्राफ 51 बहुत मशहूर हुआ। तो वही फोटोग्राफ गोजलिंग ने विल्किंस को प्रोवाइड किया, और विल्किंस ने इसे फिर आगे किया, वाटसन एंड क्रिक को दिया। लेकिन यहाँ पर ये आप जरूर याद रखेंगे कि विदाउट द कंसेंट एंड विदाउट इन्फॉर्मिंग द फ्रैंकलिन। तो इसीलिए हम यहाँ पर ये कहेंगे कि फ्रैंकलिन को भी वो क्रेडिट नहीं मिला जो उसके मिलने वाला था। वो हम बाद में फिर से मैं आपको बताऊं, लेकिन पहले मैं यहाँ पर बोर्ड रब करूं। सो वी नाउ कम टू नो दैट विल्किंस and Franklin, they suggested that the DNA has helical configuration. Point number 1, helical configuration, that is, it forms the helix. Now secondly, they found that this helix has a constant width, that is constant diameter. That constant diameter is about 2 nanometers, and 2 nanometers, as you know, is equal to 24 angstroms. So further they said that one spiral, that is one turn of this helix, is about 34 angstrom, or we can say 3.4 nanometers in length. So helical nature or helical configuration of DNA, constant diameter of 20 angstroms, and one spiral of the helix or one turn of the helix is equal to 34 angstroms or 3.4 nanometers. And they also suggested that there are 10 bases, 10 base pairs or 10 bases, we can say, in one turn. So in one spiral there are 10 bases, and we can calculate the distance between two bases. Distance between two bases would become 34 divided by 10, that is 3.4 angstroms, which was already given by Astbury. This is the confirmation of the Astbury's inferences. Now one more thing which they postulated or which they suggested is that the constant diameter of the DNA helix is 2 nanometers, and that could accommodate only two strands only, that is two polynucleotide chains only, as against 3 strands which was given by Pauling. Remember, Pauling's gave the triplex model of DNA, and he advocated that there are 3 polynucleotide chains. तो उसका यही कहना था कि 3 polynucleotide chains के जो phosphate backbones हैं, sugar phosphate backbones एक दूसरे के साथ रहती है, तो जो बेस है वो प्रोजेक्ट करती है आउटवर्ड्स, बट दैट इज नॉट केमिकली एफिशिएंट। तो इसीलिए अब इसको यहाँ पर
The करा गया that the triplex model which was proposed by Pauling is not correct. There could be only two strands, so double helical model can be suggested here. Now these were the investigations which were proposed by Wilkins and Franklin. We may say Wilkins and Franklin, लेकिन मैं फिर से कहूँगा mostly Rosalind Franklin, a Jewish lady. उसी ने ये सब कुछ किया. उसके साथ उसका स्टूडेंट था, गॉसलिंग उसका नाम था. उन्होंने बहुत सारे फोटोग्राफ्स लिए हाइड्रेटेड डीएनए क्रिस्टल के, और एक ऐसा फोटोग्राफ जिसका जो बहुत मशहूर हुआ, फोटोग्राफ 51, दैट इज फोटो 51. तो फोटो 51 ही वो फोटो था, वो पैटर्न था जो इस फ्रैंकलिन के स्टूडेंट ने विदाउट कंसल्टिंग फ्रैंकलिन विल्किन्स को प्रोवाइड किया, और विल्किन्स ने इसे फिर प्रोवाइड किया वाटसन एंड क्रिक को, और विल्किन्स ने फिर फ्रैंकलिन की कुछ और इन्वेस्टिगेशंस भी वाटसन एंड क्रिक को थी. तो यहाँ पर इतना ही कहूँगा, दो विल्किन्स शेयर्ड द नोबेल प्राइज विद वाटसन एंड क्रिक इन 1962, दिस फ्रैंकलिन was not awarded because some say that there is a rule in the Nobel Prize that the Nobel Prize is not given posthumously, that is कि मरने के मरण उपरांत नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता, क्योंकि Franklin died in 1958 at the age of 37 due to the ovarian cancer. Perhaps it was due to the X-ray exposures, शायद X-ray की वजह से इसमें कैंसर हुआ था. लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर एक किताब की बात करूंगा जो लिखी है ब्रेंडा मैडॉक्स. Brenda Maddox is the writer of a book, and that is a book on the biography of Rosalind Franklin, and the book is titled as Rosalind Franklin, The Dark Lady of DNA. तो आप याद रखेंगे, अगर आपसे कभी पूछा जाएगा द डार्क लेडी ऑफ डीएनए कौन है, तो डार्क लेडी ऑफ डीएनए इज द रोजालैंड फ्रैंकलिन. तो इस बायोग्राफी में बहुत सारी ऐसी चीजें बताई गई है कि जिस तरीके से इस विल्किन ने या बाकी लोगों ने जो इनके साथ किया, और जो कुछ इस डीएनए डिस्कवरी के बारे में हुआ. लेकिन मुझे आपसे इतना ही कहना है कि रोजालैंड फ्रैंकलिन का जो ये कैरियर था, बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन या ऑलमोस्ट सारी इन्वेस्टिगेशंस उसी की थी, लेकिन क्रेडिट दिया गया विल्किन्स को. नाउ हियर लास्टली सॉरी, यहाँ पर these were the investigations which were used by Watson and Crick to propose their model. So now we come to learn about the two major investigations, that is Chargaff's rules and the X-ray diffraction patterns. And using these investigations, in 1953, James Watson, an American biologist, and Francis Crick, an English chemist, proposed the 3D model of DNA, and that model is known as double helical model. So double helical model of DNA, which was proposed by Watson and Crick. They did not perform any new experiments. Only intelligently they used the data and synthesized that and provided their model, that is called the double helical model. Now their model suggests, we will take these suggestions in points. Point number 1, they said that a DNA molecule consists of or comprises of two polynucleotide chains, or we may say two strands. So we can now say
डबल स्ट्रैंडेड, दो स्ट्रैंड्स। तो पहला पॉइंट इनका है कि डीएनए मॉलिक्यूल में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होती हैं और जिन्हें हम कहेंगे दो स्ट्रैंड्स। तो दूसरा, ये जो दो स्ट्रैंड्स है इनकी पोलैरिटी अपोजिट है, दैट मीन्स दे आर रनिंग पैरेलल but opposite in direction, that is anti-parallelity, opposite in direction। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर एक का डायरेक्शन है 5 प्राइम टू 3 प्राइम तो दूसरे का डायरेक्शन होगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। So in other words we can say the orientation of sugars in the two polynucleotide chains or two strands is opposite to each other. And one important thing they said that in each strand the sugar phosphate residues form the backbone of the strands, and bases, that is nitrogenous bases, project inwards. Remember this, project inwards. So दोनों स्ट्रैंड्स में जो ये शुगर फास्फेट बैंड्स जो मॉलिक्यूल्स हैं इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स दैट फॉर्म द बैकबोन ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, और इस पे जो बेसिस है नाइट्रोजनस बेसिस, दीज नाइट्रोजनस बेसिस आर प्रोजेक्टिंग इनवर्ड्स। फर्दर द नाइट्रोजनस बेसिस ऑफ टू स्ट्रैंड्स are joined or linked, we can say, by hydrogen bonds, and the base pairing is complementary, that is adenine is linked with thymine by 2 hydrogen bonds and guanine is linked with cytosine with 3 hydrogen bonds, and this is the base pairing rule. So the two strands are never identical but they are complementary. That means if we know the sequence of bases of one strand, we can depict the sequence of bases in the another strand. So I will recap here, that is there are two polynucleotide chains, two strands, double stranded. They run parallel but opposite in direction, that is anti-parallel. If one is 5 to 3, then other would be from the same point as 3 to 5 direction. Sugar phosphate residues make the backbone of the polynucleotide chains. Nitrogenous bases which are attached to the sugars project inwards, and the nitrogenous bases of the two strands are linked or joined by hydrogen bonds, and the hydrogen bonds are formed between adenine and thymine, guanine and cytosine, 2 bonds between adenine and thymine, 3 bonds between guanine and cytosine. Further they said that the two strands are spirally twisted around a common axis. This is a very important point. Around a common axis to form a double helix. तो जो दो स्ट्रैंड्स यहाँ पर हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं and they rotate around a common axis in the form of a helix forming a spiral. तो यहाँ पर इस पॉइंट को समझने के लिए I will have a demonstration. थोड़ा सा मैंने यहाँ पर एक वर्कआउट किया है. I have made this paper staircase, or we can say a paper ladder. To try to understand here, these are the vertical bars of the ladder and these are the rungs between the ladders. Now here the vertical bars are formed of, in case of this DNA, they are formed of
sugar phosphate residues forming the backbone, and the inward projecting bases of the two strands, they join by hydrogen bonds and they form the rungs. So this would be if the DNA would be straight chain. Now we are saying here that the DNA is actually a helicus, and here the DNA, both the parallel chains which are running parallel, they are rotating around a common axis. Let us consider this as a common axis, and इस common axis पर मैं इसे rotate करने जा रहा हूँ. Remember, the rotation is towards the right. तो अगर मैं इसे रोटेट करूं इस तरीके से, तो यहाँ हम एक बड़े से क्वेश्चन का जवाब देंगे, क्योंकि बहुत बार मुझसे मेरे स्टूडेंट्स पूछते हैं, तो उस क्वेश्चन पर भी मैं आऊंगा. यहाँ पर देखें, सो द डीएनए डबल हेलिक्स की जो दो स्ट्रैंड्स है, नो दे आर पैरेलल टू ईच अदर, दे रन इन पैरेलल बट इन अपोजिट इन डायरेक्शन, बट they are helically twisted around a common axis and forming a double helix. So in this way a double helix would be formed. So अगर हम इस common axis को यहाँ बाहर निकाल दें, so the shape would be like this. So यहाँ पर अगर हम आप देखेंगे, so the turn is the right hand, both are. तो यहाँ पर एक बात हम याद रखेंगे, the diameter between the two strands, that width between the two strands always remains constant throughout the entire length. क्योंकि बहुत बार मुझसे मेरे स्टूडेंट्स ये पूछ बैठते क्लासेस में, जो हमारा एक्चुअल क्लासरूम होता है, तो उसमें बहुत बार मुझसे मेरे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि ये कांस्टेंट डायमीटर कैसे रहेगा जब एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड पर ट्विस्टेड है. रिमेंबर, एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड पर ट्विस्टेड नहीं है. बोथ द स्ट्रैंड्स आर पैरेलल, हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे दूर दूर रहते हैं, लेकिन दे आर रोटेटिंग अराउंड ए कॉमन एक्सिस. तो एक हेलिक्स बनता है, एक स्टायर केस की तरह. तो बिल्कुल इसी तरीके से जहां पर ये देख रहे हैं हम, तो यहां पर ये ट्वाइनिंग है दो स्ट्रैंड्स की, और इस ट्वाइनिंग की वजह से यहां पर अगर आप देखोगे दो ग्रूव्स बनते हैं, एक मेजर ग्रूव यहां पर और दूसरा माइनर ग्रूव, एंड मेजर ग्रूव माइनर ग्रूव मेजर ग्रूव माइनर ग्रूव अल्टरनेटली. यहां पर याद रखें, मेजर ग्रूव जो यहां पर बनती है इसके डायमेंशंस है, इट इज अबाउट 22 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स वाइड. तो इसी तरीके से माइनर ग्रूव जो है दैट इज अबाउट 12 एंगस्ट्रॉम वाइड. तो इस तरीके से ये आप अंदाजा लगा सकते हो, एक स्टायर केस है, स्पाइरल स्टायर केस है. तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर. तो बाकी हम ऐड इसमें करेंगे जो ऑब्जर्वेशन अभी हमने एक्सरे डिफ्रैक्शन से ली, दैट यहाँ पर वन टर्न इज फ्रॉम ए मेजर ग्रूव टू अनदर मेजर ग्रूव, और फ्रॉम वन माइनर ग्रूव टू अनदर माइनर ग्रूव. दिस इज वन कंप्लीट टर्न, दैट मीन्स 360 डिग्री revolution. Now this one turn, its length is 34 angstroms, that is its pitch इसे बोलते हैं 34 angstroms. तो यहाँ पर इस एक टर्न में we find that there are 10 bases, and so the distance between the two bases is 3.4 angstrom units, and this was the model which was proposed by Watson and Crick. Now remember, फिर से मैं यहाँ पर बता दूँ, कोई नई एक्सपेरिमेंटेशन नहीं की उन्होंने, but intelligently they used the data which was provided by Chargaff's rules or the X-ray diffraction patterns, and they were successful in giving a 3D model of DNA. Remember, this DNA model earned them the Nobel Prize in Physiology and Medicine in 1962, and they shared this Nobel Prize with the Wilkins. अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो विल्किन्स का कितना काम था. विल्किन्स ने भी थोड़ा काम किया था, लेकिन उतना नहीं किया था जितना फ्रैंकलिन ने किया था. लेकिन फ्रैंकलिन शायद पहले ही मर चुकी थी, शायद पोस्टमसली उसको नहीं दिया गया था, लेकिन फिर भी उसे उतना क्रेडिट नहीं मिला इसका जितना कि उसे मिलना चाहिए था. दो वाटसन और क्रिक ने फ्रैंकलिन का जिक्र किया था जब उन्होंने अपना ये वन पेपर जो आर्टिकल इस डीएनए मॉडल पे था नेचर में पब्लिश किया था एट पेज नंबर
page number 738. So that one page article fetched them the Nobel Prize in 1962. So ये था हमारा इस स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए दैट इज डबल हेलिकल मॉडल। तो रिमेंबर स्टूडेंट्स, मैंने हर कोई बात इस लेक्चर के दौरान कही, तो इसमें से जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं वो कुछ पॉइंट स्पीक कर सकते हैं, लेकिन जिनको आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठना है या उनकी स्टडी करनी है, तो उनके लिए ये वीडियो मैंने एट लेंथ हर कोई चीज़ इसमें मैंने बता दी। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो मैं तो बस यही चाहूँगा आप इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया है इन दोनों वीडियो को एक साथ देखें, कोशिश करें। तो इसी के साथ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि यहाँ पर अपलोडिंग की प्रॉब्लम है, तो हमारा नेटवर्क 2G है, थोड़ा सा देर होती है हमारी जो वीडियोस में, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा लगातार हमारी वीडियोस देखते रहें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, तो आपको ये वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह से नवाज़ुस।